Okay, hi everyone. So today's topic will be joins in SQL. So first I will show you this diagram and then we will go through the example. फिर हम उसके बाद example देखेंगे. So these are the different types of joins in SQL or any of the relational database. So suppose if you see over here, this is the left join. So these are ये दो different table है, table A and table B. So these are the basic syntax of left join. So normally left join will cover all the data, all the matching data from both the tables, and only those are not matching data from the left table that is also covered in left join. So we will see in example very soon. Then right side, this is the example of right join. Then 1 minute. Can anyone say? Can anyone say what kind of join this one is? Middle one. Outer join, sir. No. Actually, here it is written left join. This one, left side. I am. Uh, I think that is right. no. It is not right join. Okay, I will show you example also. This is actually left anti join. Then in this middle one is a inner join because it is showing the intersection between table A and table B. Then above one is right join. Then this one is right anti join. Then this is full outer join, and then this is full outer anti join. So these are basically all of the types of join. So now let's directly jump to the example. So here I have created the two different tables, table A and table employee and table department. So in the employees table, you can see employee ID, name, department ID, and salary and city column is there. So I have already inserted the data into the same, and then I have created the department table, and I have inserted the data into the department table as well. Then उसके बाद मैंने एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट टेबल का डेटा जो है वो एक्सेल के अंदर मैंने ले लिया है यहाँ पे. तो ये मेरा जो है वो एम्प्लॉइज टेबल है. और ये मेरा जो है वो है डिपार्टमेंट टेबल. और ये है डिपार्टमेंट टेबल. Now we have to do all types of join, inner join, left join. So यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है, और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर है आईडी कॉलम. सो ये दोनों कॉलम कॉमन है दोनों टेबल के अंदर. एक मिनट.
Okay, so in employees table department ID column, and in department table ID column is the common column. Then we have to do inner join, left join, right join, full outer join, then left anti join, right anti join, and then full outer anti join. So okay, now we will, if we can see this department ID 1, 2, 3, 4, this four IDs 1, 2, 3, 4 is available in the department table, right? 1, 2, 3, 4. Then this one is, fifth one is not available, then 8 is not available. From this employees table, 5 and 8 is not available in department table, right? This one 5 and 8. And in this department table, department ID 9, ID 9 and ID 10 is not available into this employees department ID column, right? So now we have to do inner join between both the, so we will retrieve all the columns from both the tables. So these are the inner join will give us the nine record total, right? So how it can be 9? So 1, 2, 3, 4, then 5, 6, 7, 8, 9, 10. It should give, okay, this one 5 is again coming, so we have to eliminate this one. So it is giving 9 record, right? 1, 2, 3, 4, then 5, then 6, then 7, 8, 9. So this 9 record is showing over here in inner join of employees and department, and we have done the inner join on the basis of department ID and ID column. So up to here everything is clear, right? This result set. Hello. Okay, my voice is clearly coming, right? Right, right. Okay, okay. So now we will do the left join. So in the left join, basically what will be the output? All the records from the left table as well as matching records from the right table. So now can anyone tell me how many records will come in the left join when we do between employees and department table? Can anyone say me only count only? 12. Okay, 12 records. Okay, now let me do it. Okay, it is coming 12 records. And here, if you see over here, there are null is coming in some of the records. So, can anyone tell me why null is coming in these three records? Those are not matching records. Okay, so उसके जो I think there is nothing correct. ओके उसका जो डिपार्टमेंट आईडी है वो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, उसके इसके कारण यहाँ पे वो नल वैल्यू दे रहा है। तो ये आईडी और डिपार्टमेंट नेम वी आर रिट्राइविंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल सो दैट इट विल मैच बी, नहीं हो रहा है। हाँ वो मैच नहीं हो रहा है, 5 आईडी अवेलेबल नहीं है डिपार्टमेंट टेबल के अंदर। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट इन केस ऑफ राइट जॉइन? हाउ मेनी रोज विल कम? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 and I think 11. 10, 11. 11.
11. I think it should come 11. Now let me check it. Okay, it is coming 11 rows, and all the left, all these two records are null because these columns are we are retrieving from the employees table, and this is non-matching rows from employees table, which is available only in department but not in employees table. So it is coming as null. Now we have to do the full after join, right? So this will be the full after join. So now can anyone tell me how many records it will come in full join? How many records will come when 14. we do the full join? 14. 14, yes. Let me do it. Yes, it is correct. 14 records are coming, and respectively non-matching records null value are coming in employees and department both the tables. Now does anyone know about the left anti join? No, Arshit, actually, I heard this first time. Sorry. Actually, I heard this first time. Integer. Okay, does anyone have any idea about left anti join? It will show all the records but not showing the matching records. Okay, it will show. All the record from left table but not matching rows from both the tables. Okay, yes, right. Let me show you. So here, these are the normal left join, right? Normal left join. But when we require the left anti join, then it will then those records which are present in the left table only, but not present in the right table. So these are all the matching rows, right? One, two, three, four. These are all the matching rows. So it is present in the both the tables, right? But now what is our requirement? Our requirement is हमें वही record चाहिए जो लेफ्ट टेबल में है बट राइट टेबल में नहीं नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो यहाँ पे हम देखेंगे 5, फिर ये 7 और ये 9. 5, 7 एंड 9, these are the employee IDs, and these are the these employees department ID is not present in the department's ID column. So here additionally we need to add one more condition where ID is null, means where d dot id is null. So it will give us only 3 records. So this is considered as a left anti join. Now again the right anti join. It is same. We need to check e dot department id is null. So these are these 9 and 10 id from the department table, which is not present in the employees department table. So this is called right anti join. And then one more we can say is full anti. Now, can anyone write a query for the full anti join and send me in the message box how we can write the query for full anti join? You can write it down in the chat message.
anti join means only the matching records from the left table and also matching record from the right table. Sorry, not matching record from the left table and not matching record from the right table. It should not come matching records from either both the tables. So our result set will be, we can say that 5, our result sets will be this one 5, 10, 7, 9, and this two, I think 5 record it should come. Or can anyone tell me how we can write the query for full anti join? Actually, this left anti and right anti join concept is also coming in Power BI also. Can anyone tell me how can we write the full anti join? Yes, Yes. where we need on where condition we need to mention Where? deper, e dot department id and d dot department id is null. Okay, let me try. I think it will give wrong result, but let me try. It may not give any output. Yes, this is little wrong. You can use or. Yes, it should be or not end, Yes. because both condition will never be satisfied, Right, right? right. So now it is coming. This is the result of full outer anti join. Okay, now we will see one more example of here. We have two different tables, table A and table B. So let me show you. Okay, let me copy paste this data into the Excel file again. Now you have to write the answer in the chat. Everyone has to write the answer into chat message. Okay. Okay, I am sending you in the chat message. This is table A data, table A. So there is only one column in both the table. So this is table A data. Now table B data I am sending. Table B data. This is table B data. Now you have to write the answer in case of inner join, then left join, right join, and full outer join. How many rows, how many records it will come in place of inner join, left join, right join, and inner join? You have to answer, everyone has to answer this in chat box.
This will definitely clear your joining concepts. I have sent both the tables, table A, table B. Now you just have to write only inner join will give how many records, then left join will give how many records, then right join will give how many records, and full outer join will give how many records. Anything right or wrong, any answer you can write, but please write it down. We will check inner join 15. Actually, write all the answers together if possible. Okay, full outer 19, inner join 15. Or let me know. Right join 18. Okay. Okay, now we will see inner join. Now let's see for the inner join first. So this one record will joining with this one record, right? Then again this one record will joining with this one record, and again this one record is joining with this third one record. So Yeah, these three. Arshit, can I ask you one thing? You have written a syntax, where you are using some characters like employee table dot e or somewhere d, somewhere a, like c, from table, from employees e, and you are using e dot department id is equal to d dot. Can you just explain in few words that line syntax, how you have to write for full join, and what is the role of d here, what is the role of e here, or we are like aliasing these? Okay, so this is select star from employees E. So employees is table name, and this is E is a alias name. So we can say that we can write as also, we can write one thing as E. As E means this employee will now considering as a E. In E is known as alias, means another name of the table. Then same for D. So D is also as alias. D is also alias. Now in the joining condition, we have to mention one column, right? One column from both the table. So here, if I can mention E also. E dot department ID. It means this department ID column is present in employees table.
and then d.id means id. The id column is present in departments d table. Now, if I have not mentioned over right? Suppose I have not mentioned over E. Now, what is the problem? The problem is I have to write entire table name over here. Employees dot department ID and then department dot ID. So now my query will be lengthy, right? Little lengthy. I have to mention complete table name everywhere. But because of now I have mentioned the alias over here, my task will be easy, right? As D. So now I can mention E and then D and also over here E. So now this will consider as a alias. Like we are, you are got it right. Yeah, Means this is the alias name and another name for the object. We can say that. So this will simplify my query. This alias will simplify my query. Okay, now let's see this example. So over here, this one will be joining with this all the three one from the right table. So three record from this one. Now again this second one is joining with all the three records. So again plus three more record it will come. Then this two record is joining with these two, and this two is joining with these two. So again 2 is coming two times, 1 and 2. So 2 is also coming two times, then 3. So 3 is coming also 1 and plus 1 also. So 3 is also coming two times. Then 4 is also coming two times. 4 is coming over here twice, right? So 4 is coming two times. And now no other record are there. So maybe something is wrong. 3, 3, 6, 8, 10, 12. Okay, 1. Okay, this 5 is coming three times, right? So now we have to sum of all this record. So 15. So inner join will come up with the 15 records, right? That is a correct answer. So now let me do the inner join between these two table. So it will coming 15 records, right? Now what in case of the left join? So in case of the left join, these three record will come extra because up to here everything is matching, right? Up to here we have already done. So everything is matching over here in the right table. But these three is extra. So these three we have to add. So 18. So left join will give us 18 records. Actually, this is the most common interview question. ये बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चन इंटरव्यू में. Now what about in the right join? So right join we do not need to consider this one. We are just considering this one, and then in the right join these three are extra, right? This one and this one. So again we need to add 3 over here, and again 18 will be our result set. So let me execute this one. So 18 is the result set, and in case of full join, now can anyone tell me how many records will come in full join? 21.
Right, exact. Full join. These are common records will come. These common records will come, and plus these three from this above one, these three and these three from the this below one. So now we need to do total of all this, which is 21. So full join will come the 21 records. So now clear everyone. Okay, now we will see one more example. Now, um, okay, this is employees table. Now, can anyone tell me? Anyone are aware about this cross join? Cross join. Select star from employees table, and then we can say that department table. So cross join is basically a Cartesian product from both the tables. So if you can see over here, this is the employees table and below one is the department table, right? So जब जब भी हम क्रॉस ज्वाइन करते हैं तो ये एम्प्लॉय टेबल का जो एक रिकॉर्ड है वो डिपार्टमेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स के साथ ज्वाइन होगा और रिजल्ट सेट देगा। फिर वही ऑल द रिकॉर्ड्स फॉर एम्प्लॉइज टेबल के लिए वो रेप्लिकेट होगा। जैसे कि ये सेकंड रिकॉर्ड है तो सेकंड रिकॉर्ड भी डिपार्टमेंट के सारे रिकॉर्ड के साथ ज्वाइन होगा और वो डेटा रिट्राइव करेगा। तो यहाँ पे आप कोई बता सकता है कि क्रॉस ज्वाइन में कितने रिकॉर्ड आएंगे काउंट? फर्स्ट टेबल के जितने रो है और सेकंड टेबल के जितने रो उनका मल्टीप्लिकेशन। ओके, दोनों टेबल का तो यहाँ पे फर्स्ट टेबल में 12 रिकॉर्ड्स है और नीचे के टेबल में 6 रिकॉर्ड है। तो 72। 72 रिकॉर्ड आएंगे अगर हम क्रॉस ज्वाइन करेंगे तो ये दिस इज द रिजल्ट सेट ऑफ क्रॉस ज्वाइन। यहाँ पे हम कोई ज्वाइनिंग कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते हैं, सिर्फ कॉमा करके दूसरे टेबल का नाम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि क्रॉस ज्वाइन कीवर्ड चलता है कि नहीं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। या क्रॉस ज्वाइन कीवर्ड इज आल्सो वर्किंग, but here we are not specifying anything in the own clause, right? So this is basically a example of cross join. Okay, now we will see another. So I have created the table, books table, authors table, and editors table. तो बुक्स टेबल में है आईडी कॉलम, टाइटल कॉलम, टाइप, ऑथर आईडी, एडिटर आईडी एंड ट्रांसलेटर आईडी। और ऑथर्स टेबल में है आईडी कॉलम, तो ये आईडी कॉलम जो है वो बुक्स टेबल में एज ए ऑथर आईडी प्रेजेंट है यहाँ पे। वही कॉलम ऑथर्स टेबल में एज आईडी कॉलम है और एडिटर्स टेबल में जो आईडी कॉलम है वो प्रेजेंट है अगेन बुक्स टेबल में एज ए एडिटर आईडी। नाउ वी कैन जॉइन ऑल द थ्री कॉलम्स एंड दिस इज द थर्ड टेबल, ट्रांसलेटर टेबल। और ये ट्रांसलेटर टेबल में जो आईडी कॉलम है वो भी बुक्स टेबल में एज ए ट्रांसलेटर आईडी प्रेजेंट है। मैंने तीनों टेबल में डेटा इंसर्ट कर दिया है। ओके, इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अगर प्रैक्टिस में चाहिए
तो आप बाकी के एग्जांपल यू कैन डू इन दी प्रैक्टिस नाउ. Okay, what this example one? Okay, I want to select data from all the tables. Okay, ये मेरे चारों टेबल का डेटा है. Books table, then authors table, editor table, and translators table. Now our requirement is, let's say we want to show book titles along with their authors. It means we require author's first name and last name. The book titles are stored in the books table. So यहाँ पे आप देखोगे कि बुक्स टेबल के अंदर बुक के टाइटल का नाम है. ये भी वेरी सिंपल एग्जांपल है. एंड ऑथर नेम्स मींस ऑथर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आर प्रेजेंट इन दी ऑथर्स टेबल. सो ऑथर्स टेबल में हम देखेंगे. सो ये नीचे का टेबल ऑथर्स टेबल में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है इन. So now what we have to do, we can write select then star from and then join, right? Now can anyone write me the query? What we have to select, sorry, in from table what will come and join what will come. And does anyone know if we are writing only join, then what will be the default join over here? Inner join. Okay, right, correct. The default it will be an inner join if we not specify any keyword. Now can anyone write me the query for this example? पहले हमें फ्रॉम क्लोज में क्या लिखना है? फ्रॉम A book from book table we ओके बुक्स लिख दिया. फिर जॉइन में क्या आएगा? जॉइन में join authors. ओके ऑथर्स के. ओके नाउ अगर आपको कॉलम देखना है तो ये कॉलम है यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स के सारे. अब जॉइन हम कौन सी कंडीशन पे लगाएंगे? Author's ID and book ID. नो First name, last name. नो नो. जॉइन में ओन कंडीशन में हमें क्या लिखना होगा? Matching records. पर कॉलम कॉलम कौन सा आएगा? ID column. आईडी कॉलम फ्रॉम विच टेबल? Author table, author. Authors and book. ओके सो बुक टेबल में से कौन सा कॉलम आएगा? बुक टेबल में से ID वाला. नो. बुक टेबल में से आईडी 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 वाला नहीं ला सकते. ला देखिए बुक टेबल में आईडी Author's लिखा है ID. 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ के Author's नीचे ID. के कोई टेबल में है 1 2 3 4 5 6. कोई भी टेबल Author's में 1 ID. 2 3 4 5 6 है. 11, 12, 13, 14, 15 ये वाला. ऑथर आईडी लेंगे इसमें से. ऑथर आईडी लेंगे. तो यहाँ पे बी डॉट ऑथर आईडी आएगा एंड ए डॉट आईडी आएगा. तो ये हमारा ज्वाइन बन गया. अब हम बुक टेबल में से हमें लेना है तो बी डॉट टाइटल लेंगे एंड ए डॉट फर्स्ट नेम. इसको हम कह सकते हैं एज एलियास ऑथर्स फर्स्ट नेम एंड देन अगेन ए डॉट लास्ट नेम एज ऑथर्स लास्ट नेम. सो ये हो गया. अब देखते हैं ट्राई करते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या लगता. ओके ये आ गया टाइटल ऑथर फर्स्ट नेम ऑथर लास्ट नेम.
सभी बुक के लिए आ गया। अगर बुक टेबल में हम देखेंगे तो कितने रिकॉर्ड है बुक टेबल में? 8 रिकॉर्ड। सो ये 8 रिकॉर्ड के लिए उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। तो ऑथर टेबल में हम देखेंगे 11, 12, 13, 14, 15 सभी है। तो यहाँ पे भी 11, 12, 13, 14, 15। सो कोई दो बुक्स ऐसी होगी या दो बुक्स या मल्टीपल बुक्स जिसके ऑथर सेम है, राइट? यहाँ पे ऑथर आईडी में सो वो चीज रिपीट होंगी। फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी रिपीट होंगे यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जैसे कि यो है यो डो, तो ये यहाँ पे रिपीट हुआ यो डो। फिर एलन रिपीट हुआ, यहाँ पे रिपीट हुआ, तो बिकॉज ऑफ वन ऑथर इज राइटिंग टू मल्टीपल बुक्स, राइट? ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये दूसरा दूसरा एग्जांपल है। In our second example, we will be displaying books along with their translators. We will be displaying books along with their translators. The translator's last name. Only half of our books have been translated and thus have a corresponding translator. So what would be the result of joining the books and translated tables using inner join? Okay. So यहाँ पे कोई बता सकता है? ये चारों में यहाँ पे ले लेता हूँ। Now we require only two tables, books table and translator table. अब यहाँ पे देखोगे बुक्स टेबल एंड ट्रांसलेटर टेबल। सो ट्रांसलेटर टेबल में ये जो ट्रांसलेटर आईडी है, सॉरी, बुक्स टेबल में ये जो ट्रांसलेटर आईडी है वो काफी कॉलम में नल है, राइट? काफी कॉलम में नल है और कुछ ही कॉलम के लिए वो अवेलेबल है। सो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि ओनली हाफ ऑफ अवर बुक्स हैज बीन ट्रांसलेटेड। सो टोटल 8 रिकॉर्ड है, बट उसमें से 4 ही बुक जो है वो अभी तक ट्रांसलेटेड हो चुकी है, बाकी की 4 बुक नहीं हुई है। तो 10 have a corresponding translator ID, right? Now, so what would be the result of joining the books and translator tables using inner join? So आप बताएगा कोई क्या, कितने रिकॉर्ड आएंगे हमारे ये इनर जॉइन में जब हम बुक्स टेबल एंड ट्रांसलेटर टेबल का ज्वाइन करेंगे? तो कितने रिकॉर्ड आएंगे? ये मेरा बुक्स टेबल है और नीचे का मेरा ट्रांसलेटर टेबल है। तो इसका जो रिजल्ट सेट उन्होंने कहा है उसमें हमें कितने रिकॉर्ड आएंगे? 4 records. Yes, right, exactly. It will come 4 records because translator ID is present in 1, 2, 3 and 4 records only. Others has translator ID is null. So it will come with 4 records only. But now suppose मान लो कि हमें सभी रिकॉर्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन। फुल आउटर यूज करेंगे। Okay, let me try with it. Okay, by using the full outer join, it will show us all the records from the employee table, and it is showing null over here because these are the books which are not still translated.
Now let's jump to the next question. Let's say that we want to display information about each book's author and translator. We also want to keep the basic information about each book. Okay. तो नाउ इसकी क्वेरी कोई राइट करवाएगा? यहाँ पे मुझे शायद चारों टेबल की मैं ले लेता हूँ. Okay. For instance, let's say that we want to display information about each book's author and translator. And we also want to keep the basic information about each book. So कोई आप बताएगा यहाँ पे क्वेरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे एक कंसेप्ट होगा कि ज्वाइनिंग मोर देन 2 टेबल्स. तो यहाँ पे हम मल्टीपल 3 बार टेबल्स को इनर जोन यूज करेंगे. सॉरी मतलब वी हैव टू यूज 3 टाइम्स इनर जॉइन. ओके लेट मी ट्राई. क्वेरी कैसे बनाएंगे हम? फर्स्ट वी विल जॉइन बुक्स एंड ऑथर्स टेबल. तो सबसे पहले तो फ्रॉम क्लोज में आएगा बुक्स टेबल. ये हमने एलियास दे दिया. फिर यहाँ पे जॉइन ऑथर्स. ओके जॉइन ऑथर्स ऑन b dot author id equal to a dot id. ओके अब We have to find common between authors and translator table ID. okay I will show you all the tables. Actually actually that is not mandatory, because if you see these tables, right, these all the 4 tables I am showing over here. Now you can see there will be nothing in common between author table, translator table, and which is the other table, editors table. There is nothing in common. So it is not mandatory that we need to join between second table and third table. That is not mandatory. Firstly, we need to identify which is our main table, which is which is having all the common columns from all the others table. That we have to identify over here. So वो table जो है वो बुक्स टेबल ही है, ओनली बुक्स टेबल. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या है, ये है ऑथर आईडी, ये है एडिटर आईडी और ये है ट्रांसलेटर आईडी. अब ये ऑथर टेबल में आईडी जो है वो ऑथर आईडी आईडी है, वो यही बुक्स टेबल का ऑथर आईडी है. अब नीचे के टेबल में, एडिटर्स टेबल में जो आईडी है वही बुक्स टेबल का एडिटर आईडी है. और सेम अगर ट्रांसलेटर टेबल का आईडी देखेंगे तो वही बुक्स टेबल का ट्रांसलेटर आईडी. तो ये हमारा मेन टेबल हुआ. जो बुक्स टेबल है ना, वो हमारा मेन टेबल हुआ, क्योंकि वो नीचे के तीनों टेबल को प्राइमरी की, तीनों टेबल की जो है मेन कॉलम है वो कंसिस्ट करता है. तो हमें हर बार ज्वाइन करेंगे तो बुक्स टेबल का ही, बुक्स टेबल का तो हम ज्वाइन लेंगे ही लेंगे. ज्वाइनिंग कंडीशन में यहाँ पे हम किसके साथ करना है? ट्रांसलेटर के साथ करना है, राइट. ट्रांसलेटर टी. सो ऑन टी डॉट, ट्रांसलेटर्स है यहाँ पे, टी डॉट आईडी ले लिया और फिर बी डॉट ट्रांसलेटर आईडी ले लिया. अगर हम यहाँ पे ऑथर की जगह ट्रांसलेटर टेबल का ज्वाइन हम बुक्स, अरे ऑथर के साथ करते तो हमारे पास कोई कॉमन कॉलम ही नहीं है ऑथर और ट्रांसलेटर को ज्वाइन करने के लिए. तो हमें ये जो पोर्शन है ये डेटा एनालिसिस का पार्ट है.
यहाँ पे डेटा एनालिस्ट करना चाहिए कि हमारा कौन सा टेबल जो है वो सारी कॉलम को एग्जिस्ट करता है, सारी कॉलम इसके अंदर एग्जिस्ट है, तो वो हमारा बुक्स टेबल है। अब ये हमारा ज्वाइन हो गया, राइट? ज्वाइन हो गया। अब मैं ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे मेरा डेटा तो आ गया, पर एक प्रॉब्लम हो गया। बी डॉट स्टार करूंगा मैं सिर्फ। ओके, फॉर लेट्स से वी वांट टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट ईच बुक्स ऑथर एंड ट्रांसलेटर, तो यहाँ पे मैं बी डॉट टाइटल ले लूंगा, फिर ए डॉट फर्स्ट नेम, ए डॉट लास्ट नेम, एंड देन टी डॉट फर्स्ट नेम एंड टी डॉट लास्ट नेम। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया। अब यहाँ पे क्या कहा है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू कीप द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ईच बुक। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, कोई बता सकता है? क्योंकि ये सारा जो है ना, ये सारा इसी चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ये जो लिखा है ना, क्योंकि तभी आप कहीं पे इंटरव्यू में क्वेरी सॉल्व कर पाओगे और जॉब में भी ये सब चीजें काम आएगी। कि क्या डेफिनेशन क्या कहा है उसको अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे एक गलती है, कोई बता सकता है क्या गलती है? Anything right or wrong, anything you can say, but can anyone say? कोई बता सकता है? आपको आपको ये चीज पढ़नी है, सिर्फ ये एक लाइन पढ़ के बताना है। कोई बता सकता है अब क्या गलती है? इट्स वेरी वेरी इजी। ID, title, and type, right? मीन्स एक्चुअली ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये मैंने जो हाईलाइट किया है वही एक लाइन आपको पढ़ना है। मैंने आपको हिंट भी दे दिया, ये लाइन आपको पढ़ना है और बता सकते हैं। अच्छा, आईडी टाइटल और टाइप, चलो मान लो ये भी मैं लिख देता हूँ कि बी डॉट Actually, आई डी ले लिया, we बी want only डॉट last टाइटल name. ऑलरेडी है, टाइप ले लिया, चलो टाइप भी ले लिया। और एक गलती है, और एक गलती है। We want only last name, not first name. कहाँ पे? ओके, हाँ वो भी चलेगा, चलो ये भी कर दिया, लास्ट नेम कर दिया। अभी भी एक गलती है। T dot first name वो भी निकाल दो. ठीक है, वो भी निकाल देता। अभी एक गलती है। Title. Type mention किया है. First name, last name. वो और कंडीशन आएगा. दो जॉइंस हमने लिखे वो ऐसे अलाउड है क्या?
मीन्स हम 10 ज्वाइन भी लिख सकते हैं, 15 ज्वाइन भी लिख सकते हैं। हमारा रिजल्ट तो शो कर ही रहा है, एरर कोई दे नहीं रहा है, ऐसे में नहीं कह रहा हूँ। रिजल्ट तो हमारा शो कर ही रहा है, पर ये रिजल्ट जो है ना, ये रिजल्ट गलत है, ये रिजल्ट। बिकॉज लास्ट नेम की वजह से हो रहा है ये सब। ना ना, एक्चुअली ये जो हाईलाइटेड लाइन है ना, वही आप पढ़िए। चलो मैं पढ़ता हूँ। फॉर इंस्टेंस, ऊपर पहले उसके ऊपर की लाइन पढ़ता हूँ। फॉर इंस्टेंस लेट्स से दैट वी वांट टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट ईच बुक्स ऑथर एंड ट्रांसलेटर, ईच बुक्स ऑथर एंड ट्रांसलेटर। नाउ उसके नीचे की लाइन, वी ऑल्सो वांट टू कीप द बेसिक इंफॉर्मेशन about each book, we also want to keep the basic information about each book। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें सारे बुक की बेसिक इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए, सारे बुक की बेसिक इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें बुक के अंदर कितने रिकॉर्ड है, बुक के अंदर है 8 रिकॉर्ड। अब यहाँ पे मेरे हो गए 4 रिकॉर्ड, तो बाकी के 4 बुक की बेसिक इंफॉर्मेशन तो मुझे गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? क्योंकि यहाँ पे हमने ज्वाइन यूज किया है, इनर ज्वाइन। यहाँ पे आएगा लेफ्ट ज्वाइन, क्योंकि बुक्स टेबल हमारा लेफ्ट टेबल है, राइट। बुक्स का टेबल है लेफ्ट टेबल, तो यहाँ पे सारे बुक का हमें टाइटल चाहिए और लास्ट नेम चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेटर के अंदर सारे बुक्स अवेलेबल नहीं है, वो हमने देखा था, राइट। ट्रांसलेटर के अंदर हमारे सारे बुक अवेलेबल नहीं है, मतलब ट्रांसलेटर कॉलम के अंदर सारे बुक के लिए ट्रांसलेटर आईडी प्रेजेंट नहीं है। तो वो हमने इनर ज्वाइन किया था, तो ये नल वाला रिकॉर्ड गायब हो जा रहा था, लेकिन हमें नल वाले रिकॉर्ड भी चाहिए। तो उसके लिए ये जो बुक्स टेबल है वो हमारा लेफ्ट टेबल है, राइट। क्योंकि सबसे पहले है, इसलिए बुक्स टेबल हमारा लेफ्ट टेबल है। सो हमें लेफ्ट ज्वाइन करना पड़ेगा, इनर ज्वाइन करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मेरी ये क्वेरी करेक्ट हो गई। तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू कीप द बेसिक इंफॉर्मेशन। सो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए, अगर वो ऑथर के अंदर या ट्रांसलेटर के टेबल के अंदर हो या ना हो तो सारी डिटेल चाहिए, अगर ना हो तो बेसिक इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे किया लेफ्ट ज्वाइन, क्योंकि बुक्स टेबल हमारा लेफ्ट टेबल है। ये हमारा क्या हुआ, ज्वाइनिंग मोर देन 2 टेबल्स। हम यहाँ पे 10 टेबल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन कंडीशन सारी सही होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने वही किया है, ये मैंने कर देता हूँ। ओके, नाउ 4 5 6 7 ये 4 एग्जांपल्स आप लोग प्रैक्टिस में करोगे, तो मैं आपको प्रैक्टिस में देता हूँ। यस सर। ओके, यू कैन सेंड मी द डिटेल्स थ्रू व्हाट्सएप और ओवर हियर, एनीथिंग विल बी फाइन। मैं आपको सब लोगों को ये सारी क्वेरीज जो आज हम लोगों ने की है वो सब कुछ भेज दूंगा, उसके साथ ये असाइनमेंट भी दे दूंगा, ये जो अभी। सर एक ड्राइव लिंक ही शेयर कर दीजिए ना। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, ड्राइव लिंक एक गूगल ड्राइव में शेयर करके हाँ। सब कुछ रख के आपको वहां से ये सारी फाइल दे देता हूँ। नाउ लेट मी नो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन।